So, hello everyone. Today I gave you another question from the mean, and I wanted you to do it from the shortcut method. तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं ऑल्सो ये डेविएशन मेथड ही शॉर्टकट मेथड होता है तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक तो पहला क्वेश्चन था अच्छा सो मैंने सिंपल मेथड दैट मींस डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड दोनों से ही एक बार सॉल्व किया है सो दैट आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे कि दोनों के आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है दोनों के आंसर सेम ही आएंगे मीन सेम ही रहेगा आप किसी भी मेथड को यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं either through direct method or through shortcut method. So first I have solved the questions through the direct method, simple method. तो उसका फॉर्मूला जैसे कि हमने कल किया ही था आप एक बार अरेंज कर लीजिए और यूजुअली मैंने इस क्वेश्चन में अरेंज नहीं कर पाया है बट यू नो द वे एंड प्लीज फॉलो द वे विच इज to arrange them into ascending or descending order first and then calculate them divided by n which is the number of the total values, right? So total of the values divided by number of the values which is 85, that will be the answer through the simple method. Now we are using the same question and we are solving it from the shortcut method. Now shortcut method is if you want to remember it clearly, always remember shortcut method would be the deviation method. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है मीन डेविएशन, ओके, एंड शॉर्टकट मेथड एंड अरेंज कर लिया है यहाँ पे मैंने सीरीज को. सो 75 80 85 एंड 90 एंड 95 अज्यूम्ड मीन ले लेंगे विच इज ए. ओके, आई थिंक आई शुड यूज अ डिफरेंट पेन. या एंड मीन डेविएशन निकालने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं वो है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. तो फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिख पाया है तो मैंने लीनियर मैनर में ही लिख दिया है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो जितना भी अज्यूम्ड मीन है हम लोगों ने 85 जो लिया था अज्यूम्ड मीन में से एक एक करके हम लोग सीरीज के जो भी डिजिट हैं उनको माइनस करते हुए चलेंगे. तो 75 माइनस 85 विच इज अज्यूम्ड मीन, 80 माइनस 85, 85 माइनस 85, 90 माइनस 85 एंड 95 माइनस 85. सो जो मीन डेविएशन हमारा निकल कर आएगा and divided by n, sigma d divided by n which is the basic. So mean deviation हमारा -10 निकल कर आएगा. 75 में से 85 अगर आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर निकल के आएगा. 80 में से 85 करेंगे तो -5 निकल कर आया. 85 में से 85 किया तो 0 आया. 90 में से 85 किया तो 5 आया एंड 95 में से 85 किया तो 10 आया. डिवाइडेड बाय 5 विच इज द n. ओके, सो सारे माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे विच इज 15 एंड सारे प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिया विच इज प्लस का 15. सो -15 एंड प्लस का 15 वुड बी 0. एंड शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो हमने लगाया था वो यही था कि अज्यूम्ड मीन्स प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. सो सिग्मा डी अपॉन एन हमारा निकल कर आएगा विच इज 0 अपॉन 5, राइट? एंड वट एवर यू डिवाइड, नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, वट एवर यू डिवाइड बाई 0, whenever 0 is divided by something that is equal to 0, so your sigma d upon n would be 0. Now when you add it into the assumed mean which is 85, the answer would be 85. So the score would be 85. And there is another very important thing to note down is that whenever you divide something by 0, that will be infinity or not defined. Answer में कई बार option में आपको not define आएगा. अगर वो 0 से divide हो रहा है तो that answer would be not defined. Now the second question was regarding heart and centimeters में दिया हुआ था. Same question direct method से solve किया है मैंने which is total of the number total of the values upon my number of values, right? So total of the values would be 150 plus 155 plus 160 plus 165 plus 170, that would be 800 and it will be divided by number of the values which is 5. So the answer would be 165. That is through the direct method. Now I'm going to solve the same question through the shortcut method. And we all know we say it through a deviation method. So अब हम assumed mean ले लेंगे and we have taken the assumed mean as 160. Okay. एंड मीन डेविएशन निकालने के लिए हम लोग 160 सीरीज में से 160 को माइनस करते हुए चले जाएंगे. सो फर्स्ट अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है तो 150 माइनस 160, 155 माइनस 160, 160 माइनस 160, 165 माइनस 160,
and 170 minus 160. So the answer would be minus ka 10, minus ka 5, 0, 160 minus 160, 165 minus 65 and 10, right? And you divided by 5 as the formula says. So 0 by 5, again, the answer would be 0. But now you have to put it into the formula and then you solve it. So first assumed mean, which is 160, and 0 by 5, you know the answer would be 0, right? And 0 plus 160 would be 0. And you have to use the value, which is centimeter of the height in the answer. So that would be your answer. Now, this is a very unique question because it has digits. So certainly your answer is not going to come into zero, right? So the units were $3,000, $3,500, $4,000, $4,500, $5,000, and $5,500. Through direct methods, we have come as 4250 dollars. Now we can recheck it as well. So मीन डेविएशन निकालने के लिए assumed मीन हमने ले लिया है which is 4000, एंड सबको माइनस करते हुए चले जाएंगे, सब में से माइनस करते हुए चले जाएंगे 4000 को। टोटल हमारी जो डिजिट है वो है 6, which is the n, राइट? मीन डेविएशन निकाल लिया है जिसमें 3000 में से 4000 अगर हमने माइनस किया तो हमारा माइनस का 1000 आया। 3500 में से 4000 माइनस किया तो 500 का माइनस माइनस का 500 आया। 4000 में से 4000 माइनस किया 0। फिर 4500 में से 4000 माइनस किया 500। 5000 में से 4000 1000, एंड 5500 में से 4000 माइनस किया, दैट इज 1500, एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 6, राइट? So now you add them, right? This is actually written by mistake. So 1000 plus 500, that would be 1500, right? 1500 would be of minus ka, and 1000 plus 1500, that is 2500, plus 500, that is 3000, 3000, right? 3000 minus 50, so 3000, that is plus ka 3000, right? Sorry, I am not very used to of this method. I'm just learning these days. So 3000 plus का minus का 1500, when you minus them, that would be 1500, and sign plus का ही आएगा because plus का digit बड़ा है। जो assumed mean था वो हमारा 4000 था, and हमारा जो n था वो था 6। सो अब पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 6 वुड बी 250, एंड 4000 इज assumed mean, so 4000 plus 250 would be 4250. That was the answer we got in the direct method as well. So you can recheck your answer through the direct method and also through the shortcut method. So $4250 would be your answer through shortcut method. Now next question was of speed. So we have given different speed, and through the direct method we have solved it, total values upon my number of values. So total values would be 350 plus 55, 60 plus 65 and 70 would be 300, divided by number of values would be 5, and the answer would be 60 kilometer per hour. Now let's check if the answer comes the same from the shortcut method. So shortcut method, we all know, so many times we have gone through the formula, assumed means plus sigma d upon n, that is our formula. Now sigma d निकालने के लिए deviation निकालना पड़ेगा, and mean deviation निकालने के लिए सीरीज में से assumed mean को माइनस करते हुए चले जाएंगे। सीरीज क्या थी? 50, 55, 60, 65 एंड 70। 50 में से 60 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 55 में से 60 माइनस करेंगे, माइनस का 5 आ जाएगा। 60 में से 60 माइनस करेंगे 0, and 65 minus 60 is equal to 5, and 70 minus 60 will be 10, and you can see ये दोनों सिमिलर आएंगे। 15 and 15 प्लस का आएगा, 15 माइनस का आएगा, दैट मीन्स ये जीरो वाला सीरीज चले जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 5 would be 0. That is what I told earlier. Whatever you divide 0 with, whenever you divide 0 with something, the answer would be 0, and whenever you divide something with 0 would be infinite. So 0 by 5 would be 0, and the assumed mean was 60. When you add them both, that would be 60 kilometer per hour, and that was our answer. Now I think this is the second last question, or maybe last question. So temperatures given है 25, 28, 22, 30 and 26, एंड इसको सीरीज में अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैंने किया नहीं है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत फास्टली सबको सॉल्व कर रही थी।
But you must arrange them into a order. So that would be 22, then 25, 26, 28, and 30 degrees Celsius, and divided by number of the values, which is 5. When you add them all, that would be 131 upon my 5, which is the number of values, and the total would be 26.2. That is the Celsius answer with the direct method. Now we are going to solve the mean